कहाँ निकल गए? मोबाइल स्विच ऑफ ना हो, काम है उससे आज ले आओ, दे दो ना, हो रखे हैं पास, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आवाज ही लग रहा है सर, जुड़ नहीं पा रहे क्या अभी? आभा जी लग रहा है सर, अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। पानी पी ले, पानी पी ले। सर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हम लोग वेट करेंगे जब तक
बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें, हम लोग वेट करेंगे जब तक सर नहीं जुड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर इंतजार और करना है, थोड़ी देर। but number is different, ना? ठीक है? Access joint. हो गया ना? Good morning. Welcome, sir. Welcome. Good morning, sir. Very good morning, all. गुड मॉर्निंग सर। Morning. Abha madam, please start the session. जी सर, जी। ओके सर। UGC-HRDC सेंटर DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर द्वारा आयोजित इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के इस प्रथम सत्र में मैं डॉक्टर प्रशंसा शर्मा, महिला महाविद्यालय BHU से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा ज्ञानवर्धन करने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रोफेसर ओंकार नाथ उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। और डॉक्टर सुधीर कुमार जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो सर का औपचारिक स्वागत करें। ओवर टू यू सर, डॉक्टर सुधीर कुमार जी। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज श्रावस्ती से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित UGC-HRDC 4th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में आज हम सबके बीच एज द रिसोर्स पर्सन के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर ओंकार नाथ उपाध्याय सर उपस्थित हैं। सर का इस प्रोग्राम में हम सभी प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर आज क्यूरिकुलम डिजाइनिंग, आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड चॉइस बेस्ड लर्निंग सिस्टम विषय पर अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करेंगे। इससे पहले मैं सर का थोड़ा सा जो है
सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सर का एरिया है इंग्लिश पोएट्री, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। सर ने द डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी द लिटरेचर ऑफ म्यूटिशियस शीर्षक पर अपना शोध कार्य पूरा किया है। इसके अलावा सर ने नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार में अपने रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किए हैं। सर की 2 बुक्स भी प्रकाशित हैं। इसके साथ ही अब मैं चाहूँगा कि सर अपने व्याख्यान से हम सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करें। धन्यवाद बंदोबस्त। The topic of today's lecture is curriculum designing, outcome-based learning, and choice-based credit system, also known as CBCS. Actually, in higher education, new education, National Education Policy 2020, we find drastic change in the formation of curriculum and syllabus. So first, let us discuss about the difference between curriculum and syllabus. जो पाठ्यक्रम है वह एक विषय के, एक क्लास के, एक यूनिट में जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ाना है, पुस्तकें, उनकी जानकारी देता है। Whereas curriculum deals with multiple areas of framing the system. The system, I mean to say, designing. When we design the curriculum of any subject, we should always focus attention upon the relevance of the course. जब भी कोई पाठ्यक्रम बनता है, सबसे पहले उसकी क्या उपयोगिता है, इसका ध्यान रखा जाता है। The first thing we focus attention upon the relevance of the topic or the course. As far as FIP is concerned, it is meant for enriching the faculty members of different streams of knowledge in connection with its interdisciplinarity. FIP is not specified to a subject, but FIP deals with multiple areas of subjects. So, may I talk to you something about, say for example, language. Any language, maybe Hindi, English, Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, French, German, Russian, English, whatever it is, Chinese. Every language has its own components. So, sufficiency of language. When we talk of sufficiency of language, we frame certain modules, and those modules are applicable in all languages. All languages has its alphabets, and alphabets vary from language to language. Not only alphabets,
but scripts also differ from each other. Each language has its specific number of alphabets. Sometimes the language is scientifically arranged, and sometimes we find its variations. As far as Sanskrit School of Language is concerned, it has its scientific mode of pronunciation. But when we talk of English language consists of 26 alphabets, out of which we find 21 consonants, 5 vowels. Not only that, but we also find combination of vowel sounds, which is known as diphthongs. When we find two vowel sounds together, say for example, create, EA, loud, OU, bear, air. So when we find two vowel sounds together, it's called diphthongs. So in this way, there are 26 alphabets in English language. Out of 26 alphabets, we find 44 sounds in English language. So now let us talk about, yes, alphabets. From alphabets, we find words. Words consist of alphabets, which convey certain meaning. If alphabets are placed together in a systematic order which conveys meaning, it is called words. And from words, we find syntax. Syntax, I mean to say, sentence structure. From words, we find an order of words in the form of sentence. So when we talk of structure of sentence also differs from language to language. I'll give you an example of 3 languages. In Hindi language, the structural order is SOV. Ram फल खाता है. But when we translate the same into English, its structural order is SVO. Subject, verb, then object. Ram eats mangoes. But when we come to Sanskrit language, here we find complete freedom. Freedom in order of the sentence. May I give one example? When Kalidas came to Vidyottama, then Vidyottama said, Asti kaschit vag vishesha. The sentence begins with asti, which is verb form. Vag vishesha. And Kalidas wrote 4 magnum opus, starting with each alphabet, each words. Asti, kaschit, vag, vishesha. So we find alphabets, words, structure of sentence. Then we find grammar. Grammar also
varies from language to language. Take you the example. In English, we find only two kinds of numbers: singular number and plural number. But when we study Sanskrit language, it consists of three kinds of numbers: ekvachan, dvivachan, bahuvachan. Secondly, in English, I is first form, but in Sanskrit, he is considered as the first form. So, language varies from each other. Again, we find two kinds of, rather we can say three kinds. First is, so let me tell you the meaning of word trans, T-R-A-N-S. Trans means change. When we find the change of language, it is called translation. But when we change only script from Devanagari to Roman Lipi, it is called transliteration. So in this way, we find different order in different languages. In grammar also, when we discuss the grammar of English, let me tell you one thing, that grammar is the soul of language. And language is the soul of literature. Language is the soul of literature. So, this aspect is very important when we discuss the curriculum of language. In the present scenario, when we talk of NEP 2020, one very important component is to be discussed. NEP 2020 deals with integration of humanities and social science with STEM. STEM means science, technology, engineering, and mathematics. There's a watertight compartment in different schools of knowledge. But at present time, we find combination and correlation of different languages, different schools of knowledge. We find different schools of knowledge, no doubt. But each complement the other. In this way, when I discuss some very famous novelists and poets of English literature, we find that they were engineers and doctors. So there's no any watertight compartment in framing the syllabus. Now let us come to the main topic, which is allotted to me for discussion of the day. That is curriculum designing. When we design any curriculum, we should always keep in mind
the curriculum of different universities, not only across the nation, but across the world also. Because the curriculum requires complete knowledge of the subject. At the same time, in NEP, due space is given to Indian knowledge system, Indian School of Knowledge. Actually, sometimes we find Indian knowledge system and incorporate Indian knowledge system as a part of curriculum in a very small space is given to Indian knowledge system. But, my friends, when the syllabus is framed, we should always focus, maximum importance be given to Indian knowledge system. In every stream of knowledge, whether it is science or technology or mathematics or literature or grammar, everywhere we find Indian school of thoughts. But since the system which we adopt at present, which prevails, not we adopt, which prevails in the 21st century today, it was based upon the curriculum designed or the education system adopted by Lord Macaulay in 1835. Since 1835 to 2022, about approximately 200 years back, we still follow the education system propounded by Lord Macaulay. What was that education system? If you read a very famous novel of Tabish Khair, and the title is Babu Fiction, it means Indian Lord Macaulay education system produced Babus. Babus, I mean to say clerks. Maybe super grade clerks or lower grade clerks. It keeps the motive of this education system of Lord Macaulay is to keep Indians far away from their own knowledge system. One thing. And second thing is to highlight, focus attention upon the superiority of Western school of thoughts. So in every stream of knowledge, we find that we still focus attention upon Western school of thoughts in every stream of knowledge. Even when we study English literature,
hardly we find one paper of Indian literature English or Indian English literature or Indian writing in English or Indian English translation or translation theory and practice. What I mean to say that a great deal of work have already been done in Indian knowledge system. As we all know, that knowledge system begins from Vedas. Ved, the very word Ved means Vid. Vid means Gyan. Knowledge means Gyan. So instead of, actually what happens, there are two things. First, after getting job, we all become lotus eaters. We must be Ulysses. So is designed. We should always focus attention of any subject. We should always focus attention upon Indian knowledge system. Because Indian knowledge system is very rich, very profound, and is classical, not old. As classical as, or more classical than that of Greek and Latin. So curriculum designing is a very important component of knowledge which requires comprehensive and rigorous studies that can only be possible if we faculty members should strengthen ourselves in connection with Indian school of thoughts. Because in science also, in technology also, in mathematics also, in poetry as well, can I tell you. Even not only that, in lexicography, the first dictionary was written was Amarkosh, which is very famous, but hardly we focus attention upon Amarkosh. We focused attention upon Dr. Samuel Johnson and considered Samuel Johnson was as the first lexicographer. So in curriculum, what I mean to say, while designing curriculum of any stream of knowledge, of any subject, we should give due importance and space to Indian knowledge system. This is the first thing. Now let me discuss something about how to develop a curriculum of any subject. Focusing attention with special reference to English language. Clear? With special reference to English language. So, in curriculum, what I feel, having the experience of so many universities' syllabus, and not only that, we also worked in NCT in connection with an international curriculum development at educational level. So we study that
syllabus. सॉरी सर फॉर इंटरप्ट करने के लिए। एक्चुअली हमारे पार्टिसिपेंट सर हिंदी लैंग्वेज के ज़्यादा हैं और तो इंग्लिश के भी हैं, तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दोनों लैंग्वेजेस यूज करें, अदरवाइज। जी। जी। तो जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं उस समय सबसे पहला विषय ये आता है, जिस सब्जेक्ट का करिकुलम हो उसके लगभग सारे किन किन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी कंपोनेंट होगा उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसमें ऑर्डर है, सिस्टम है, व्यवस्था है, तब वो करिकुलम परफेक्ट होगा। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है कई यूनिवर्सिटीज का, जब हम करिकुलम को पेपर में डिवाइड करते हैं तो पेपर में डिवाइड करते समय भी एक सिस्टम होना चाहिए। आज के टॉपिक का 3 पार्ट है, करिकुलम डिजाइनिंग, लर्निंग आउटकम and CBCS. So I have to focus attention upon all the 3 components together, because you cannot divide or discuss one without the discussion of the other. What is choice-based grading system? And what is the relevance of choice-based CBCS scheme? Actually, in choice-based grading system, we find interdisciplinarity की बात हम करते हैं। इंग्लिश का स्टूडेंट है, इंग्लिश का जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं तो साथ में फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइंस के पेपर्स और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क्स, इनके भी माइनर पेपर्स रखते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है, उसी प्रकार से जब मैथमेटिक्स का करिकुलम डेवलप होता है उसमें भी इंग्लिश का एक पेपर होना चाहिए, जिससे कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट की इंग्लिश भी स्ट्रांग हो और इंग्लिश के स्टूडेंट का ज्ञान मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज का होना चाहिए। तो सीबीसीएस का एक ऑब्जेक्टिव तो ये। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीसीएस स्कीम इज इट इज क्रेडिट based system. The paper, the whole curriculum, suppose that the curriculum is divided, the whole curriculum is of 96 credits. Divided into 5 papers. So 5 papers means 24, 24, 24, that is 72, and then 8, 8, 8, that is 24, 96.
Apart from that, in CBCS also we find 0 credit papers. There are certain papers which demand only qualifying marks. Competency is not required, but qualifying the paper is important component. मैं इंग्लिश पे आता हूँ फिर। बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि कई जटिलताओं को हम लोगों को फेस करना पड़ता है। सिलेबस, curriculum development is a skill. It cannot be randomly developed. उसको रैंडम रूप में आप डेवलप नहीं कर सकते। And also at the same time it requires very rigorous and scientific analysis. So when we frame the curriculum, from curriculum let me come to syllabus. Suppose that there are 6 papers. Each paper is divided into units. Now see how scientific it is. And each unit is divided into credits. Suppose that the paper is of 26 credits and there are 6 units. Each unit consists of 4 credits. Not only that, at the same time, we also specify number of hours in which the unit may be covered. मैंने कहा कि जस्टिस होनी चाहिए, इसलिए कहा जस्टिस होनी चाहिए जब हम रैंडमली पेपर का करिकुलम डेवलप करते हैं तो हम जस्टिस नहीं कर पाते। अभी मैं किसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज में था, हमको लगता है आप सभी लोग, अधिकांश लोग यूपी को ही बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। Government of UP has provided a specific syllabus to us, and we have to adopt. We have to, let's see the language. We have to adopt the syllabus with 30% of changes. Now see, you can neither delete nor add, but only you can replace. So what I feel that since university is an autonomous system, so freedom should be given to the university to adopt his own syllabus and curriculum, to develop its own curriculum, because the university is known from its syllabus. अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाता है
तो इसलिए जाना जाता है कि आप अमुक विश्वविद्यालय से आए हैं, उसका इतना रिच सिलेबस। तो when we frame the syllabus, we should always keep in mind few things. What I wish to say, that is, first, title of the paper. The title of the paper should be clear and perfect. Now, say for example, if the title is From Chaucer to the Renaissance, and Charles Lamb is included in the paper, that is the flaw of the paper, of the curriculum. So, always we should keep in mind the title of the paper and the units of the paper. Balance should be there in the units. If you incorporate 4 plays in 1 unit, I had strong objection, because एक यूनिट में 4 प्ले एक सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं जा सकता है। Justice cannot be done. I strongly objected, and I have strong objections. In the same way, when we prepare the paper, when we prepare the syllabus of the paper, in the beginning of the syllabus of the paper, introduction should be given about the title of the paper, about the components of the paper, about the relevance of the paper. Then we should mention, divide the paper into units. So when we divide the papers into units, there should be proper balance. हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना पढ़ा सकते हैं। एक, क्योंकि अब वो ईयर वाइज सिलेबस नहीं है, सेमेस्टर वाइज है, 6 months, वो भी 6 months में हार्डली आई थिंक 4 months. When we should also count the number of periods. So it's a very scientific task. It should not be framed within a day or within a week. It should not be given to a specific person to get it done. यह एक कोलैबोरेटिव टास्क है जिसकी सैंक्टिटी सबको एक्नॉलेज करना चाहिए, कितना यह पवित्र कार्य है करिकुलम डेवलपमेंट, और फिर उसमें उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस with the students, with the teachers, with the paper setters, and with the examiners. न्याय स्टूडेंट के साथ भी हो। पता लगा
कि आपने नॉवेल को डिटेल्ड में कर दिया, संभव है, इम्पॉसिबल। और if you incorporate more than 2 plays in one unit or more than 1 play for detailed study, तो justice should be there. मैंने कहा justice केवल स्टूडेंट के साथ नहीं, justice टीचर्स के साथ भी होना चाहिए. Whether the teacher can cover the syllabus within the specified periods allotted to him. If yes, good. Otherwise, we have to rethink while framing the syllabus. Syllabus topic आपने दे दिया. Then we should also mention learning outcomes. उस पेपर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या सीखता है. मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है, ये सारी चीजें थियरी नहीं है, which we often presume. We often presume that titles of the paper, its division into units, then credits, then number of hours to be covered. ये सारी चीजें randomly और at a stretch नहीं हो सकती. इसके लिए पूरा समय होना चाहिए. और जो मेंबर्स हैं उनसे अनुरोध है कि करिकुलम डेवलप करते समय टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैंने पेपर सेटर्स को भी कहा और एग्जामिनर्स के लिए भी, सबका ध्यान रखना चाहिए. हम केवल ये ध्यान रखते हैं कि हमारा सिलेबस कितना रिच हो. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस the standard of syllabus of undergraduate should be lesser than that of postgraduate. And there should be a hierarchy in learn के बाद डेवलपमेंट करते समय हमें nature of question paper should also be mentioned. Nature of question paper. This I meant to say what types of questions are to be asked. और फिर लास्ट में चूंकि suggested reading or study materials should also be given. Suggested reading or study materials should also be given at the end of the each syllabus, each paper. फिर मुझे निवेदन करना है कि हम केवल रिचुअल्स समझ करके इसे फॉर्मेलिटी न करें. अक्सर होता है कि कुछ बुक्स हैं उसको कॉपी किया, पेस्ट किया. आजकल तो इट्स वेरी कॉमन फीचर. So it is very important thing to be noted that curriculum designing
is completely a scientific task which needs collaborative efforts. Members should be open-minded. I should not use any negative or derogatory words. Members should be open-minded to receive the thoughts and ideas of different nooks and corners. And there's no harm. There's no harm in consulting the syllabus of other industries. At present scenario, due importance is given to regional knowledge in the specific subjects. क्षेत्रीयता का ज्ञान, जहां पर वैश्विक ज्ञान, वहीं पर क्षेत्रीय ज्ञान को भी समावेशित करना चाहिए. So what I feel that when the government says 30% changes, so that 30% changes should be incorporated on the basis of local requirements. Next, while curriculum designing, we should always keep in mind that in syllabus, options should not be there. There may be option in the papers. There may be option in the papers. For example, the student may be free to opt either SARC literature or Canadian literature or Australian literature or new literatures in English or translation theory and practices or Indian literature in translation. But there should not be option in between Henry Fielding's Tom Jones or Oliver Twist's Charles Dickens Oliver Twist. इसमें ऑप्शन नहीं होना चाहिए. पेपर का ऑप्शन तो होना चाहिए. And this is the beauty of credits CBCS scheme. The student should be free to adopt and follow the paper of his own choice. But there should not be any option like or within the paper. ऐसा नहीं कि अरुण कोलटकर 4 points और A.K. Ramanujan's 4 points. That invites trouble. Basically to the examiners, to the students, to the teachers, and to the paper setters as well. So curriculum designing is a complete scientific task which focuses attention according to NEP 2020 on Indian knowledge system. That can only be possible, या तभी संभव होगा जब हम भारतीय ज्ञान विधा के प्रति स्वयं में अभिरुचि पैदा करें. जब हमारे अंदर अभिरुचि होगी तभी हम अभिरुचि अपने स्टूडेंट के अंदर पैदा कर सकते हैं.
और जब हमारे अंदर अभिरुचि नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ जो है उस सिस्टम को कंडेम करें, एंड वी फॉलो द सिस्टम ऑफ लॉर्ड मैकॉले, दैट इज टू क्रिएट बाबू. Friends, Indian knowledge system is very rich, very profound, scientific होता है. भारतीय ज्ञान विधा बहुत ही प्राचीन है, गंभीर विषयों पर इस पे चर्चा की गई है. वैज्ञानिक उसके अध्ययन की आवश्यकता है, और अन्यथा हम 64 से लेकर के और सीमसीनी तक पढ़ाते रहेंगे. हम रिवर टेम्स की बात करेंगे, लेकिन गंगा की बात नहीं कर पाए. हम रैल्फ वाल्डो इमर्सन के ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करेंगे, लेकिन शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की बात नहीं करेंगे. हम एरिस्टोटल के पोएटिक्स की बात करेंगे, लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की चर्चा नहीं करेंगे. आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान विज्ञान का जो भी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से भारतीय परिवेश, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति का समावेश हो, और साथ ही साथ स्थानीय में भाषा की बात तो नहीं करता हूं, बल्कि इतना जरूर है कि उस क्षेत्र विशेष की जो उपलब्धि है उसको भी हमें अपने पाठ्यक्रम में समावेशित करना चाहिए. यह एक अत्यंत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और NEP 2020 में इस पे काफी जोर दिया गया है. ये कोई सैद्धांतिक विषय नहीं है जिस पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा किया जाए, बल्कि यह प्योर कंप्लीटली प्रैग्मेटिक अप्रोच जिसको हमें अपने कमिंग जनरेशन को भारत के प्रति निष्ठावान और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूक करने के लिए हमें अपने पाठ्यक्रम को उसी के अनुरूप डेवलप करने की आवश्यकता है. तो अब मैं चाहूंगा कि अगर हमारे कोई बंधु कुछ हमसे अपने विचार शेयर करें तो हम एक दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. ओवर टू द ऑडियंस. इस विषय में कुछ किसी पार्टिसिपेंट को यदि कुछ पूछना हो तो सर से अपने विचार रख सकते हैं. प्रणाम सर. और मैं डॉक्टर आभादी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिल वस्तु. सर, जैसा कि आपने आज पाठ्यक्रम निर्माण की बात कही, CBCS प्रणाली के अंतर्गत जो NEP 2020 में
पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी जैसा कि आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 70-30 का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष लागू हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल पे लागू हुआ है सर। और उसमें सौभाग्य था कि मुझे भी पाठ करने का, मैं भी एक हिस्सा थी अपने यहाँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, BOS की मेंबर हूँ। तो उसमें सर 70-30 का जो चेंज हुआ, तो 30 जो आपने बताया और बहुत अच्छा लगा जान के कि लगभग उन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के और सारी बातों का ध्यान रखते हुए, तो उसमें तो बस 30% चेंजेस करने थे हमें, क्योंकि हम उन्मुक्त नहीं थे पूरी तरह से। तो उसमें जितना हो पाया तो वो किया हम लोगों ने, और वो पाठ्यक्रम चल भी रहा है। पिछले विगत 1 वर्ष से वो पाठ्यक्रम चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर भी आ गया उसका। इस वर्ष हम लोग को उत्तर प्रदेश शासन से पुनः स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम करने मिला है जी। और सहयोग से वो पाठ्यक्रम भी बनाने की जिम्मेदारी, चूंकि विश्वविद्यालय में हेड होने के नाते मुझे विशेष ध्यान रखना है। तो आपने जो जो बिंदु बताए कि पाठ्यक्रम जटिल नहीं होना चाहिए, सरल, सुगम, बोधगम्य होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि पाठक की दृष्टि से भी कि अगर कहीं कोई, जैसे हम लोग पाठ्यक्रम जब निर्माण करते समय मैंने हायर एजुकेशन कमीशन का भी लिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का लिया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आधार पे हमारे यहाँ पहले चल रहा था, लेकिन एक ही अब हम लोगों ने चेंज किया, तो उसको भी लिया, इलाहाबाद से भी हमने लिया। तो सबको लेकर के एक थोड़ा सा कि वही होता है, सार तत्व को ले लेना जहाँ से बेहतर जो हो। और मैंने कोशिश की कि कुछ बेहतर उसमें से जो क्रेडिट बेस्ड है कि हम लोग को 4 पेपर बनाने हैं, चारों पेपर 5 इकाइयों में जितने के, तो मैंने ये सोचा कि 5 इकाई है तो 5 क्रेडिट रखा जाए, जिसमें नंबर डिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। 75-25 का अगर हमारी क्लासेस का या व्याख्यान का है तो 15-75 करके ऐसे हमने हर इकाई, प्रत्येक इकाई 15 व्याख्यान का रखा, क्योंकि अब सीमित चीजें हो गई हैं सेमेस्टर में। तो वो, और जैसा कि आपने कहा कि 4 महीने मिलते हैं, तो सर 4 महीने क्या, 2.5 महीने भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो परीक्षा आ जा रही है। लेकिन ये है कि मुझे बड़ी हेल्प मिली आपके इस लेक्चर से सर, क्योंकि मैं अभी पाठ्यक्रम निर्माण में मैं सेकेंड ईयर यानी 4th सेमेस्टर, जो आपने कहा विकल्पों की बात की आपने, तो मैं वैकल्पिक अभी हूँ। मैंने वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन 4 विकल्प रखे हैं, और व्याकरण की क्योंकि स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलाइजेशन है मेरा, तो व्याकरण और दर्शन, अद्वैत दर्शन की बात आपने की, तो पिछले वर्ष मैंने अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का, उसमें मैंने अपरोक्षानुभूति पढ़ाया था, और इस बार भी मैंने शंकर अद्वैत का भी रखा हुआ है पाठ, मीमांसा दर्शन का भी है, व्यास भाष्य सहित रखा है। तो अच्छा लगा सर, मुझे काफी हेल्प मिला आपके इससे, और एक बार सारे पाठ्यक्रम को देखूंगी, अगर कहीं कोई बिंदु रह गया होगा तो पुनः आपके निर्देशानुसार और आपके जैसा कि आपने बताया, एक बार मैं कोशिश करूंगी। अभी चूंकि साहित्य और वेद, ये 2 पार्ट मैंने अभी नहीं बनाया है, क्योंकि वेद थोड़ा मेरे लिए क्लिष्ट होता है। तो वेद के किसी जो विशेषज्ञ है उनसे बात करूंगी, अब ये कार्यक्रम हम लोग का थोड़ा हो जाए तो अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। और मैं अपना सिलेबस खोल के देख रही थी, जो आप बोल रहे थे कि मैंने कहा क्या मिस्टेक तो नहीं की है कहीं कोई, तो बहुत अच्छा निर्देश मिला आपसे और बहुत सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पर्सनली मेरे तरफ से। और अभी आपका बाकी लोगों को मैं ओवर करती हूँ, पार्टिसिपेंट्स को, और किसी को कोई बात आपसे पूछनी तो थैंक यू सर। धन्यवाद बहन जी। जहाँ तक संस्कृत विषय का, संस्कृत का क्या कहा जाए, विस्तृत तो है जी जी सर जी। हमारी, और मुझे तो लगता है कि
मैंने इंटरडिसिप्लिनरिटी की बात किया, और इसीलिए मैंने स्टेम की बात किया, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, कि हर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थी को जी जी हमें लगता है कि कम से कम एक जो है 4 क्रेडिट के तहत ही सही सब की आवश्यकता है। सर, इस पे भी मैंने काम किया है, इंटरप्ट करूंगी। मैंने एक माइनर कोर्स भी बनाया है 4 क्रेडिट का, जो अन्य विषयों के और अन्य फैकल्टी के छात्र पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए आप साथ बात करें। जी जी, और हमारे SK पांडे जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा। जी सर, बिल्कुल। वैसे जहाँ तक संस्कृत का विषय है मैडम, जी सर, ये तो आपने कहा ना कि वेद, एक व्याख्यान मिला था। जी जी, मैं तो इंग्लिश का हूँ, लेकिन लोगों ने क्या दिया मुझे, वेद, उपनिषद, है ना, पुराण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, इस विषय पे तो पूरा ज्ञान विज्ञान जो है वह हमारा वेद से ही शुरू, वेद मीन्स ज्ञान होता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ये विद धातु से बना हुआ है। जी बिल्कुल, जानने में है सर, बिल्कुल। और इसीलिए ऋग्वेद is considered as the oldest poem of any language. जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो कम ज्ञान है संस्कृत का, लेकिन काफी आनंदानुभूति होती है। जो रस है, जो अलंकार है, जो छंद है, जो व्याकरण, जो है, जितना प्रोफाउंड, जितना रिच संस्कृत लैंग्वेज का है, और जितना वैज्ञानिक, मात्र एक ये भाषा है जिसको हम देव भाषा के रूप में कहते हैं। तो इस देव भाषा का ज्ञान जन सामान्य को हो, जिसके माध्यम से भारत की संस्कृति का परिचय जन सामान्य को हो सके, इसके लिए निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता हूं कि इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन in every school of thoughts, whether it is science, technology, mathematics, engineering, sociology, history, political science, philosophy, anthropology, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे भाषा के, किसी भी भाषा के, मैंने इसीलिए प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज की बात किया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि कोई भी ज्ञान विज्ञान हो, उसको हम उसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही तो करते हैं। तो हमें भाषा के का धनी होने की जरूरत है। We must be rich in the language. Thank you very much. Next, please. Anyone else? So thank you very much. प्रणाम सर, मैं निगम पांडे सर। जी पांडे सर, ये जो कर रहे थे वेद की बात कर रहे थे सर, तो वेद जानने के लिए कम से कम जो उसके अंग हैं, जैसे अंग, अंगी भाव जिसको कहते हैं, तो अंग जो उसके हैं शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष। यस, वंडरफुल। वेद को जानने के लिए इन 6 अंगों का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक जी, और एक ये जो 6 है, आपस में ही इतने विस्तृत हैं ये कि
इनको जानकर वेद जानना बहुत कठिन हो जाता है। तो सामान्य लोग समझते हैं कि वेद बहुत ही सामान्य विषय है, लेकिन ये जो है सामान्य विषय नहीं है। तो अगर कोई सामान्य है केवल, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें कोई डेप्थ नहीं है, उसमें गंभीरता है। यह हमारे कि हम उसको उस प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसीलिए इस FIP का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें किस प्रकार से अन्य भाषाओं या अन्य विषयों के प्रति अपने अंदर एक रुझान पैदा हो, जिसमें भारत और भारतीयता छिपी हुई है, सन्निहित हो। तो वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, गीता, महाभारत, ये अपने आप में इतना रिच है। और आपका जो व्याकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, या भरत मुनि का है। आप सोचें कि संस्कृत के पास ज्ञान का कितना विशाल भंडार, और अंग्रेजी में उसके अनुवाद भी उपलब्ध है। सारे के सारे हमारे जो, कहना नहीं चाहिए, हम लोग एक ही फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाता है पोएट्री का डिफिनीशन, तो स्पॉन्टेनियसली टीचर से लेकर स्टूडेंट तक एक ही बात कहता है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा। क्या हम कविता की परिभाषा के रूप में तुलसीकृत रामचरितमानस के श्लोक को नहीं कोट कर सकते हैं क्या? वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें लोक मंगल की बात की गई? वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषा है। तो भारतीयता कहाँ कहाँ सन्निहित है। भारत में जन्म लेना ही केवल भारतीयता होने का अधिकार नहीं देता है। भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो विस्तार है, उसके कम से कम बेसिक कंपोनेंट्स को तो हम सबको जानना चाहिए, और यही जानना हमारे इस FIP की सफलता होगी। धन्यवाद। जी सर, अभी आप ज्ञान विज्ञान की ही बात कर रहे थे और संस्कृत के समरसता की बात कर रहे थे। अपने उद्बोधन में आपने कहा भी था, अस्ति कश्चित वाग् विशेषः की बात की, कि भार्या के 3 शब्दों को लेकर के उन्होंने इतना महाकाव्य की रचना कर डाली, 3 ग्रंथों की रचना कर डाली। अस्ति से उन्होंने कुमार संभवम की रचना कर डाली, अस्ति कश्चित वाग् विशेषः, अद्भुततरश्याम देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। फिर उन्होंने संपृक्तौ से रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली, और कश्चित कांता ग्रह गुण स्वाधिकारात् प्रमत्ता से उन्होंने मेघदूत जैसे महनीय काव्य की रचना कर डाली। तो ये तो सर संस्कार की बात है, और वाकई जो आपने कहा कि सबको जानना चाहिए, तो उसी पे NEP काम भी कर रही है, और इसीलिए उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज किए हैं, हमें वो लाभ मिलेगा ही सबको। तो उसका क्योंकि जानना बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं भाषा, सर संस्कृत ने तो हमें वर्ड समानताएं दिया है, क्योंकि बिना वर्डों की कोई भाषा किसी विषय का अध्ययन नहीं कर सकते। और संस्कृत की वैज्ञानिकता भी तो इसी में है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं और वही पढ़ते समझते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर, अच्छा लगता है। और आप पिछली बार भी आपका व्याख्यान मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगा। और इस आप करते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। क्योंकि हम ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं
कि हमारे पास कितना समृद्ध संस्कृत साहित्य है, समृद्ध संस्कृति है हमारी। तो इसे जानने समझने की आवश्यकता है हमें। कहीं ना कहीं अपने आप को समझने के लिए हमें हमारी संस्कृति को जानना आवश्यक है। तो इसके लिए जहाँ पर एक तरफ उत्तर भारत में संस्कृत, पाली और प्राकृत में हमारा संस्कृति और साहित्य है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में तमिल साहित्य में भी, तमिल में भी जो है हमारी संस्कृति और साहित्य सन्निहित है। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। धन्यवाद। I have my next assignment. So may I get your permission? अगर किसी पार्टिसिपेंट को कुछ सर से क्वेरी करनी हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक सभी लोगों की जिज्ञासा अब शांत हो गई है सर। सभी लोग पूछ चुके हैं सर से जो भी पूछना है। तो भी हम आगे का वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सर को बुला लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन। Thank you, ma'am. Thank you so much. UGC-HRDC DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर 4th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन में जो आज का टॉपिक था सर, करिकुलम डिजाइनिंग, आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड चॉइस बेस्ड लर्निंग सिस्टम। इसमें जो सर आपने जो व्याख्यान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे फैकल्टी मेंबर और पार्टिसिपेंट्स के लिए। सर आपने बताया कि जो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, इट वाज रियली ग्रेट सर। सर आपने इस अलॉन्ग विथ अलग चीजें जो बताया सिंटैक्स और वर्ड्स के बारे में, एक जो मैंने एक लाइन आपका सर कोट किया, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। सर ये सच में ऐसा मैं जान पाया हूँ जब थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज पढ़ा और इसके बारे में जाना कि अगर ग्रामर अगर नहीं जानेंगे तो उसको हम समझना बहुत मुश्किल होगा सर। और आपने जो करिकुलम में एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया कि कोई भी करिकुलम डिजाइन करने के लिए सब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सब्जेक्ट को जानेंगे नहीं तो उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपने बात कही सर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, सर इसके बारे में मैं आज ये जो लाइन है ये पहली बार सुना, इसको मैं जानने की कोशिश करूंगा और अगर नेक्स्ट कभी सर आपका लेक्चर सुनने का मौका मिलेगा तो मैं इसमें सर पूछूंगा कि और इसमें क्या हो सकता है। बट आपने जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था सर। और एक जो इसके साथ जो सर इंडियन लिटरेचर के बारे में बताया कि बहुत सारे वेरिएशन हैं और इसको जानने की जरूरत है। उसके बाद आपने जो बताया कि सर करिकुलम डिजाइन करने में जो प्रोसेस हम लोग को रखना चाहिए वो सरल, सुगम और इजी टू कॉम्प्लेक्स, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपने जो बताया इससे हमें बहुत सीख मिली और आगे जब भी हम करिकुलम और इसको डिजाइन करने की बात करेंगे तो इसमें जो आपका ज्ञान है इसमें लेके और हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच सर। हम सारे पार्टिसिपेंट्स UGC HRDC DDU 4th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके तरफ से मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Thank you so much for giving me opportunity to speak in front of sir. Thank you so much. Thank you, sir. सर लीव हो गए हैं एक बार। ठीक है मैम, हम लोग भी लीव कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। हाँ, नेक्स्ट सेशन के लिए सुधीर सर आप प्रिपेयर्ड रहिएगा और हर्षवर्धन सर से आपस में आप लोग बात कर लीजिए कौन वोट ऑफ थैंक्स देगा। और सर मैं एक चीज और मतलब आग्रह करना चाह रही थी, जैसे अभी 5 मिनट ही बची है तो हम
प्रशंसा मैडम सेशन लीव हो रहा है, तो आप लीव ही कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ठीक ठीक। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए और लाइव सेशन को भी बंद कर दीजिए। आज आभा द्विवेदी मैम होस्ट हैं, तो लाइव सेशन तो मैं नहीं क्लोज कर पा रही हूँ।